Hi, we are making DIY epoxy resin art. For that, we require mold. We require the kit. I got it from a local store. You can also buy it from Amazon. This is a epoxy resin kit. We require some dried flowers or any props. We require the cup to mix, the pigment, and some gloves. Okay. तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल मिक्स द रेजिन, द इपॉक्सी रेजिन एंड 2 parts and 1 part ऑफ द हार्डनर. ठीक है, छोटा वाला हार्डनर है एंड विल यूज़ दिस कप. इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है. पहले मैंने क्लियर ही डाला है, मैंने पिगमेंट अभी यहाँ नहीं डाला है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज़ प्लेस दीज फ्लावर्स and you can use any other props also. मैंने end में ना इसमें glitter भी डाल दिया. You'll get that glitter paper as well. So first we will pour this in the middle so that it gives a dual effect. फिर हम क्या करेंगे, we will pour from the side the pigmented लिक्विड. तो ये पिगमेंट ना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डालेंगे तो भी यू गेट अ वेरी गुड पिगमेंटेशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्प्रेड इट इवनली एंड मेक श्योर देयर इज नो बबल्स फॉर्म्ड एंड मेक श्योर देयर इज अ थिक लेयर. फिर से हम साइड से डालेंगे. वी हैव टू पुट इट फॉर प्लेस इट फॉर 24 hours and then remove the mold. This is the final product. I really liked it. देखा मतलब दिस माई फर्स्ट टाइम, तो मुझे तो अच्छा लगा फॉर अ फर्स्ट टाइमर. सो होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से और अच्छा बनाऊंगी. ओके, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, बाय बाय.